Hello my dear students, welcome to BISWA'S chemistry. Myself Kosik Biswal, and in this lecture I am going to discuss about the next topic of the chapter, some basic concept of chemistry, that is your calculation of empirical formula from the percentage composition. And in the last class I have already discussed about empirical formula and molecular formula and the relationship between them. Okay, and in this lecture I am going to discuss about calculation of empirical formula from the percentage composition. Okay, तो चलो आज हम देखिबा आमने परसेंटेज कंपोजिशन को केमिति यूज करिकी आमने गोटे मॉलिक्यूल रो को फार्मूला को बाहर करिबा एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करिकी बाहर करिबा। ओके, तो चलो देखिबा ता पे केतोले स्पेसिफिक रूल लिखिबा और से रूल गुडो को अप्लाई करिकी आमने बाहर करिबा तार को फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, सो गाइस राइट डाउन रूल नंबर 1। रूल 1, first divide the percentage composition of each element by their respective atomic mass so as to get a simple atom ratio or atomic ratio, simple atomic ratio. Okay, rule number 1. रूल नंबर 2 एकादर लिखि दे तापर बुझेबी। रूल नंबर 2 कोजी then divide the result among them by the smallest value. Okay, then divide the result among them by the smallest value so as to give the simplest atomic ratio, Okay, this is your rule number 2. What you सब कहि so don't worry guys. Rule number 3 is your rule number 3 कोजी if the simplest ratio or simplest value if the simplest value is not a whole number जदि whole number नय दिबो then it is equivalent to its nearest whole number values, Okay, तापर देखा रूल नंबर 4 then write the whole number values at the respective right side bottom corner to give the empirical formula. Okay, write down
These are the rules. Guys, please take a screenshot. Okay. ताले रूल नंबर 1 को ताले देखिबा. रूल नंबर 1 कहूची क्वेश्चन ने हमको जो एटम गुडा को दिया है गोटे कंपाउंड रो तार जो कंपोजिशन दिया जाइथिबो से कंपोजिशन गुडा को से एटम गुडा कर एटॉमिक मास द्वारा फास्ट हम कोन करिबा डिवाइड करिबा. एटाला रूल नंबर 1. सेकंड होची ताको डिवाइड करिबा द्वारा हमको जो रिजल्ट मिलिला से रिजल्ट को हम माने कोन करिबा से सबुठार स्मॉलेस्ट वैल्यू को आमे नै कोन करिबा से रिजल्ट गुडा कर कोन कर दबा डिवाइड करिबा. जो रिजल्ट हम माने पाइबा आमे जो परसेंटेज कंपोजिशन को आमे ताकर एटॉमिक मास द्वारा डिवाइड करिबा द्वारा जो रिजल्ट मिलिबो से रिजल्ट रो सबुठार स्मॉलेस्ट वैल्यू को नै की हम माने कोन करिबा से रिजल्ट गुडा कर कोन करिबा डिवाइड करिबा. डिवाइड करिबा द्वारा हम गोटे कोन मिलिबो गोटे होल नंबर मिलिबो गोटे सिंपल होल नंबर मिलिबो. आ जदी गोटे सिंपल होल नंबर हमको न मिले तले रूल नंबर 3 कहूची ताकू तार पाखा पाखी सिंपल होल नंबर सहित हम कोन करिबा इक्वल करे दबा. आ रूल नंबर 4 कहूची जो होल नंबर गुडा हम पाइले से एलिमेंट गुडा कर राइट साइड बॉटम कॉर्नर ताको हम कोन कर दबा लिखि दबा so as to give the co formula empirical formula. Okay, so as to give the empirical formula. Okay, so guys please take a screenshot. Thank you. चलो गोटे क्वेश्चन लिखिबा से क्वेश्चन माध्यम रे हम देखिबा जे एक्चुअली केमिति परसेंटेज कंपोजिशन को नै कि हम केमिति फाइंड आउट कर परिबा एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर परिबा. ओके, सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू. चलो गोटे क्वेश्चन लिखिबा. क्वेश्चन होजी a compound contains a compound contains 54.2% of carbon, 9.2% of hydrogen, 9.2% of hydrogen and 36.6% of oxygen full stop. Then find out the empirical formula of the compound. Then find out the empirical formula of the compound. Then find out the empirical formula of the compound. ताले वर्तमान से कंपाउंड जो हमर दिया जाई छी से कंपाउंड रे हमर की प्रेजेंट अछि ना हमर कार्बन प्रेजेंट अछि 54.2% मींस कार्बन रो परसेंटेज कंपोजिशन दिया छी 54.2%, हाइड्रोजन रो परसेंटेज कंपोजिशन दिया छी 9.2% आ ता सहित ऑक्सीजन रो परसेंट कंपोजिशन के दिया छी 36.6% आ तापर पचरा जाई छी ए कंपाउंड रो को फार्मूला को बाहर करो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करो. चलो से रूल गुडा को यूज करी हम माने केमिति बाहर करिवा कोन तार एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, चलो फर्स्ट हमर क्वेश्चन डाटा गिवन अछि कोन डाटा गिवन अछि देखिबा. चलो फर्स्ट गिवन अछि कार्बन अछि आउ ता सहित कोन प्रेजेंट अछि हमर हाइड्रोजन प्रेजेंट अछि आउ ता सहित कोन प्रेजेंट अछि हमर ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि. कार्बन प्रेजेंट अछि, हाइड्रोजन प्रेजेंट अछि आउ हमर के प्रेजेंट अछि ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि. ओके, ताले समानकर परसेंटेज दे दै छी ना समानकर परसेंटेज दे दै छी परसेंटेज जेटा हम कोजे परसेंटेज कंपोजिशन. अच्छा देखिलो एटी हमर जो कार्बन अछि कार्बन केते परसेंट प्रेजेंट अछि 54.2% प्रेजेंट अछि. जो हाइड्रोजन अछि ए हाइड्रोजन हमर केते परसेंट प्रेजेंट अछि 9.2% प्रेजेंट अछि. ऑक्सीजन अछि हमर केते परसेंट प्रेजेंट अछि 36.6% हमर कोन अछि प्रेजेंट अछि. हला ताला हम रूल नंबर 1 फास्ट कोन कहूजी. चलो देखिबा से रूल नंबर 1 हमर कोन कहूजी आगे देखिबा. रूल 1 कहूजी जहार जो परसेंटेज कंपोजिशन देइची से सब गुडा को हम डिवाइड करिवा समान करा एटॉमिक मास द्वारा का द्वारा डिवाइड करिवा एटॉमिक मास द्वारा डिवाइड करिवा. ताल चलो समान देदी कार्बन रो परसेंटेज कंपोजिशन के देइची 54.2 देइची ताले 54.2 रे कार्बन रो एटॉमिक मास को डिवाइड करिवा डिवाइडेड बाय केते तमरटा 12. ओके, तापर हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास हला तमन जान जो 1 ताले 9.2 रे तमन डिवाइड करिवो केते 1
ताले आंसर टा आसीबो संग संग 9.2 आसीबो एटी जो ऑक्सीजन अछि तारटा देली 36.6 ताके डिवाइड करियो तार कोन एटॉमिक मास तो मान जानि छ ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास होची 16 अच्छा 36.6 रे हमर 16 की डिवाइड करले हमर डिवीजन रो रिजल्ट आसीबो 2.28 एटा जानि छ 9.2 आ 54.28 रे 54.2 रे जदि हम 12 को डिवाइड करिबा तले हमर आंसर आसीबो 4.51 केता आसीबो आंसर 4. केता आसीबो 51 आसीबो को हम डिवाइड करिबा आर आंसर आसीबो 4.51 ये तमर आसीबो 9.2 ये तमर आसीबो 2. केते 28 ओके ये थिला तमर रूल नंबर 1 तापरे रूल नंबर 2 कहूची जो रिजल्ट गुडा को पाइलो से रिजल्ट गुडा को लिखि दियो एडी रिजल्ट पाइलो 4.51 को लिखा आइला एडी रिजल्ट पाइलो 9.2 पाइलो 9.2 को लिखि देलो एडी थर्ड रिजल्ट पाइलो 2.28 लिखि देलो ना अच्छा देखिलो ए तीनटा को वैल्यू भितरे सबटा स्मॉलेस्ट वैल्यू कोडा तमर 2.28 ना ताले जोडा तमर आंक भितर स्मॉलेस्ट वैल्यू ताले सब गुडा को हम माने कोन कर दबा तारि द्वारा डिवाइड कर दबा ताले माने भितर सबटा स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2.28 ता माने 2.28 को डिवाइड करबा का द्वारा 2.28 ताले आंसर टा आसीबो केते हमर 1 आसीबो तापर एटी तमर 9.2 अछि 9.2 को डिवाइड करबा सेमति का द्वारा 2.28 द्वारा ओके एटी तमर 4.51 अछि आकु तमन डिवाइड करिवो 2.28 द्वारा आकु जे तमे 2.28 द्वारा डिवाइड करिवो ताले आर आंसर आसीबो तमर 1.97 आसीबो ओके आ तमे जदि 9.2 को जदि 2.28 द्वारा डिवाइड करिवो तमर आंसर आसीबो 4.0 आसीबो 4.03 आसीबो 4. केता आसीबो 03 ओके ताले ये तमर गला रूल नंबर 2 बस रूल नंबर 3 कहूची यार रूल नंबर 3 चलो देखिबा रूल नंबर 3 या हमर कहला अच्छा देखिलो एठी तमर 1.97 अछि ना ये गोटे होल नंबर बाहर छी कि ना ये गोटे फ्रैक्शनल नंबर बाहर छी ताले 1.97 को जदि हम राउंड अप करके होल करिबा ये तमर अप्रोक्सीमेट 2 सहित इक्वल हे जीवा ना ओके आ एठी तमर 4.03 की जदि हम राउंड अप करके होल नंबर करिबा ये तमर इक्वल हे जीवा का सहित 4 सहित इक्वल हे जीवो आ ये तमे डिवाइड करतो ऑलरेडी होल नंबर मिली जाय जोटे की वैल्यू होला केते तमरो 1 ऑलरेडी मिली जाय ओके ताले फाइनली तमन जानि गलो तमर जो कार्बन अछि सी तमर दीटा यूनिट प्रेजेंट अछि हाइड्रोजन जो अछि तमर चारटा यूनिट प्रेजेंट अछि जो ऑक्सीजन अछि से तमर केतरा यूनिट प्रेजेंट अछि ना गोटे यूनिट प्रेजेंट अछि ओके कोदरे ना समानकर एम्पिरिकल फार्मूला ताले फाइनली द एम्पिरिकल फार्मूला इज ताले फाइनली हमर एम्पिरिकल फार्मूला मिली गला सो फाइनली द एम्पिरिकल फार्मूला एटा की रूल नंबर 4 रे डाका आइला एम्पिरिकल फार्मूला इज कार्बन रो राइट साइड रे बॉटम कॉर्नर केते लिखिबा 2 C2 हाइड्रोजन रो राइट साइड बॉटम कॉर्नर केते लिखिबा 4 बर्तमान ऑक्सीजन रो राइट साइड बॉटम कॉर्नर केते लिखिबा 1 ताले फाइनली हम माने पाइ गेले C2H4O ओके सो फाइनली द एम्पिरिकल फार्मूला इज C2H4O ओके सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट थैंक यू जदि तुम भिडियो भल लगुच भिडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो थैंक्स अ लॉट।